Hi everyone, Ashish Kyal here and this is a very quick short video जहां पर मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड को परखना है. हाउ डू यू लुक एट इट, हाउ डू यू कंबाइन इट विथ डिफरेंट इंडिकेटर्स एंड ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ इट, एंड स्पेशली इचिमोको क्लाउड इंडिकेटर कैसे यूज करना है और ये इतना पावरफुल क्यों है, ये टूल को कैसे देखना चाहिए, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा. But before I move on, I just want to ask you all the levels that I'm giving you for Nifty in the morning tweet. Is it useful? Is it helpful? Are you able to learn from it? Are you able to use that level? If yes, then do put down your comment and let me know. It's wonderful, right? What the markets are doing and the levels are also working well. Just put down your comment so that I keep doing these videos. तो आज का जो टॉपिक है, सी इचिमोको क्लाउड इज अ वेरी पावरफुल इंडिकेटर which was developed by Japanese again in the Japan long back, and that indicator has many lines. लोग वो डालते तो कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे इतना सारा चीज देखना पड़ेगा. बट यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड. आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई इट फॉर यू ऑल. This indicator can provide support, it can provide resistance, it can provide how strong the trend is, it can help in Elliott wave counting. You know, the most powerful thing of an Ichimoku cloud is it can help and assist in Elliott wave counting. और वो मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे उसे यूज कर सकते हैं. So I'm going to open up, I'm going to explain it to you on a chart. Let me just share across my screen very quickly. And how do we go about it? How do we look at it? ये सारी चीजें हम देखते हैं. I just want to check if you are able to hear and see the screen over here. Fantastic. This is a platform of Delta Exchange where you can see all the cryptocurrencies being traded. Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Ripple and all those things. So बहुत सारे cryptos यहाँ पर trade हो रहे हैं. And we are going to pick up the leader, which is Bitcoin, for application of everything that we have done. And साथ ही में इसकी पहले की अगर आप playlist देख सकते हो, you can see different videos which I have made with respect to scalping strategy. अगर आपने last time का देखा होगा, MACD कैसे use करना है, RSI, Bollinger Bands and all those things. And also, if you remember, I even talked about how Bitcoin is possibly entering into a downward move around this area when it was 1,09,000, and from there we have seen already 25% correction on the downside. So this forecast that I'm doing is basis of wave theory. Elliott wave is the GPS of the market, which helps us to forecast and understand how much prices will go from here, how you have to write that, what is the two stage confirmation. तो मैं एक इचिमोको क्लाउड के साथ आपको एक और टेक्निक बताऊंगा which is known as two stage confirmation technique. फिलहाल मैं यहां से बैंड्स को हटा रहा हूं. आई एम पुटिंग अप एन इंडिकेटर विच इज नोन एज एन इचिमोको क्लाउड. बट बिफोर आई मूव ऑन, प्लीज अंडरस्टैंड वट एवर आई एम टीचिंग हियर राइट नाउ is purely from learning and educational perspective. I'm not recommending you to buy, sell anything. And trading in crypto or stock market is risky. Maintain stop loss. There is no guarantee. Okay, it's a probability, and you have to understand the probability. So there is no guarantee of anything. So understand the risk, maintain stop loss, एंड रिस्क रिवॉर्ड निकालिए. ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है. सो इफ यू आर गोइंग ऑन दिस चार्ट एंड आई एम अप्लाइंग एन इंडिकेटर विच इज नोन एज इचिमोको क्लाउड. ये इंडिकेटर डेली पे टाइम फ्रेम पे नहीं देखना है, डेली टाइम फ्रेम बहुत बड़ा हो जाता है. आई एम गोइंग ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट. 1 आवर भी बड़ा है, हम 15 मिनट्स में आएंगे. इस इंडिकेटर से क्या पता चलता है? The cloud, which is the green cloud that you see here, acts as a support. Red acts as a resistance. When prices are above the cloud, which means overall trend buy side पे. When it's below the cloud, overall trend sell side पे better है. यहाँ अगर आप zoom in करके देखेंगे तो you will see more lines. You will see the red line, the blue line, which is the baseline and conversion line, and the cloud. वो सारी चीजें आप देख रहे हैं. अभी ये इसका पावर 1 आवर पे नहीं है, इसका पावर है 15 मिनट्स पे. नाउ इफ आई एम सीइंग दिस आवरली पे क्लाउड के नीचे है प्राइसेस. ओके, नाउ व्हेन आई गो टू 15 मिनट चार्ट, व्हेन आई गो टू 15 मिनट चार्ट, what I have to see is what is my starting point. If I'm doing my wave pattern, if I'm doing my wave count, I need to understand where do I start counting from. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है. You have to start counting from a point from where the retracement is sharp and faster. So for example,
if you're looking at this chart, the up move started here. Can you see that? And this up move completed here. इसे कितने कैंडल लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अप्रॉक्स 14 अप्रॉक्स आई एम सेइंग. कितने कैंडल में इसने रिट्रेस कर लिए पूरा पूरा अप मूव? 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स में रिट्रेस कर लिया, which means this is the starting point of the next wave down. मैं फिर रिपीट नहीं कर रहा इस चीज को. फास्टर, दिस इज अ टू स्टेज फास्टर कंफर्मेशन टेक्निक. ठीक है, इससे पता चल रहा है यार ओवरऑल ट्रेंड चेंज हो चुका है, जो अप था अभी डाउन साइड पे. नाउ दिस फर्स्ट लेग कैन बी वेव 1. This move can be wave 2 here because price came below the cloud and going towards the cloud. And then we have a reversal which is going in the form of wave 3 possibly. So this is suggesting on a 15-minute chart कि भाई ओवरऑल जो मेरा ट्रेंड है बिटकॉइन के ऊपर, अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं या मैं पोजिशनली देख रहा हूं, तो सेल साइड पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है अनलेस प्राइसेस रिवर्सेस एंड मूव्स बैक अबाउट 87,000. ये जो लेवल है कैंडल का हाई, कैंडल का हाई है, हम यहां देखेंगे कैंडल का हाई इज 87,143. सो 87,140 के ऊपर अगर जाएगा देन वी कैन से दैट देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिवर्सल बैक ऑन दी अपसाइड, बट ऊपर जाना आसान नहीं होगा. सो देर आर, एक तो पता चल गया कि ये ओवरऑल रेंज में, ठीक है, दैट्स द रेंज. सो आई एम मार्किंग that's the range that we are seeing, overall broad range. ठीक है, now within this range there is a faster retracement happen, which means possibility of downside break has increased. Now how much will it go? तो फिबोनाची टूल यूज करना पड़ता है. इचिमोको क्लाउड से कंफर्म हो रहा है नीचे का ट्रेंड शुरू हो सकता है, रिट्रेस किया, रिवर्स किया, नीचे का ट्रेंड चालू है. फिबोनाची फोरकास्ट से पता चलता है कितना नीचे जाएगा, वो मैं अभी नहीं बता रहा. अगर आपको वो सीखना है तो कमेंट और चैट पे डालिए. आई विल आल्सो टीच यू अबाउट फिबोनाची फोरकास्टिंग, कैसे वो इंडिकेटर को यूज करते, कैसे टारगेट डिराइव करते यूजिंग फिबोनाची. इट्स अ वेरी पावरफुल मेथड अगेन, बट you have to put down on the chair. Right now what I am trying to show you is this on a 15 minutes. Now there are two ways I can trade. पहला, या मैं यहां पे शॉर्ट करूं and I have to keep the stop loss of high. So मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का और कितने परसेंट का है? अप्रोक्सीमेटली 682 पॉइंट्स का, 0.8% का, डुएबल है. यहां शॉर्ट करके हाई का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं हम, डुएबल ट्रेड है इस लेवल पे, बट इट कैन मूव वेरी फास्ट. रिमेंबर दैट. इमीडिएटली आप सोच रहे हो, देख रहे हो, इतने में आ जाए तो स्टॉप लॉस डाल के रखना है. सो आई कैन कम हियर एंड इमीडिएटली आई कैन गो एंड सिलेक्ट अ सेल ऑर्डर. यहां पे आई कैन गो एंड सिलेक्ट कितना क्वांटिटी. आई कैन इवन डू इट इन 0.01 और 001, विच इज जस्ट वन लॉट, विच इज 100 or sorry 1000 of the entire crypto. So that's how I can do it, which requires 0.78 US dollar, and I can do that. That's one option. Other way to do it is I can simply go on the options and select a strike price of a call option जो दूर का है, and I can select a expiry. I can select say 28th, every other day. यहाँ पर आपको expiry दिख रही है, and फिलहाल क्रिप्टो चल रहा है 86,480 पे. I can select 88 wala call option, which is on the left side. You can see the call options and I can go and sell that provided there is some IV. ये जो नीचे 44.3 देख रहे हो आप, that's an IV. And if you check 88,000 पे 545 का प्रीमियम है, which is decent enough. So bid ask के बीच में मार्क है, मतलब एवरेज प्राइस होता है वो. So यहां पर अगर मैं क्लिक करता हूं directly, so I can, once I click here, I can directly go on the chart and see the plotting of the option itself. Directly option chart plot हो गया, and then I can just go on 1 hour time frame chart, 15-minute chart. I can even apply Ichimoku directly on an option chart also. And what we are looking at is selling 88,000 wala call option 543 pe. If I want to trade that, I can directly come here and sell short. Select the quantity. Say example, if you want to short one Bitcoin, which is big enough, then fund requirements is going to be big because it's trading a lot more. You can just select one Bitcoin,
बहुत ज्यादा हो जाता है, यू कैन सिलेक्ट 0.01 टू एक्सपेरिमेंट और चेक, मतलब डिपेंड करता है व्हाट्स द रिस्क एपिटाइट दैट यू हैव. फंड रिक्वायरमेंट इज जस्ट $4.6. सो यू कैन जस्ट एक्सपेरिमेंट विद दैट. एंड यहाँ पर जाके आप देख सकते हो कैसे आपको करना है. वंस यू डू दैट, डायरेक्टली आपका स्टॉप लॉस क्या आ जाएगा, $720 का स्टॉप आएगा अगर आप ये बेच रहे हो तो. वाई? बिकॉज दैट इज द लेवल विच सॉ ऑन द स्पॉट चार्ट. एंड इसी तरीके से मतलब हमने किया क्या, हमने स्पॉट को देखा इस लेवल पे, एंड लुक एट दिस सपोर्ट दिस कॉल ऑप्शन वाज टेकिंग हियर, वाज फिनोमिनल सपोर्ट, एंड दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस नाउ. Support है which turned into a resistance, and this is what we are seeing prices is doing as of now. Making sense? So ये options है, but it depends what you want to do, how you want to do that, and you can apply this concept even on Ethereum. You can apply on different things and experiment करके देखो. What I can say is whatever techniques you apply on Nifty Bank Nifty, yeah, ye technique you can apply on Nifty Bank Nifty also. Ichimoku Cloud, looking at this setup, but there are more ways. I can make a series on it. If you want to know more about Fibonacci forecasting with Ichimoku Cloud, I can make a series of it also. But you have to tell me whether you want to look at it or how you want to go about it. Simple, बहुत interesting है. So इस तरीके से ट्रेड करना है, इस तरीके से देखना है दोस्तों. और I have shown you how you have to look at it in a very very systematic simple fashion. If you are interested into more such videos, do not forget to subscribe the channel, like it. And जाते जाते एक और चीज, अगर आप मेरा क्रिप्टो के एक टेलीग्राम में अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो, नीचे लिंक है, वो लिंक पे क्लिक करिए, कमेंट में पिन्ड है, आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, वेयर वी शेयर अक्रॉस दिस लर्निंग्स एंड मच मोर देन दैट. चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों. इट वॉज अ शॉर्ट क्विक वीडियो वेर आई टॉक यू अबाउट Ichimoku Cloud and how it helps in wave patterns and stuff like that, and two-stage faster retracement. So ये मैंने आपको बताया आज. If you are have any questions, put down and I'll answer those questions also. Thank you very much. Have a wonderful time. Become a wonderful trader. Ashish Kyal signing off.